Hello everyone and welcome to my YouTube channel The United Road and welcome to one live stream where I think we are going to have a lot of laugh. ठीक है मतलब बहुत हंसी आने वाली है आज and जो भी आएगा यार we all know how it's going to be. जब बार्सिलोना से रिलेटेड आजकल जो भी न्यूज आती है ना यार बार्सिलोना से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है ट्रांसफर न्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर न्यूज ऐसा नहीं है कि हर चीज पे हंसने वाली बात है दे आर डूइंग वेरी वेल इन ला लीगा उस पर कोई डाउट नहीं है बट सारे कमेंट्स लेंगे भाई सारे कमेंट्स लेंगे यूनाइटेड फैंस हेट बार्सा फैंस हेट यूनाइटेड फैंस दैट कीप्स ऑन गोइंग बट यार आज जो बात करेंगे भाई जो बार्सा का सिचुएशन है इन द ट्रांसफर मार्केट in the transfer market we all know what's happening with Barca मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है but at the same point of time मुझे लोगों का ओपिनियन जानना है भाई about certain players also I need to know कि भाई what do you think and how do you think is Barca going to get out of this mess ये मैं सोच रहा हूँ so minus 200 million yes exactly संकेत भाई I am fine how are you भाई welcomes to the stream वर्स देन पाकिस्तान यार देखो पाकिस्तान से वर्स तो नहीं बोलूंगा वो तो बिल्कुल ही गॉन केस है बट यस वेरी क्लोज आई एम रिचर देन बार्सिलोना भाई देखो वही वाली बात है दैट वी कैन लाफ एट देम बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई वही बोलते हैं ना रस्सी टूट गई बट बल नहीं गया मतलब दुनिया के सारे प्लेयर्स चाहिए इनको भले ही पैसा ना हो भले ही इन पे पैसा ना हो बट दे वांट एवरीबॉडी all the players from around the world so मुझे इनका लॉजिक नहीं समझ में आता मुझे इनका how they are basically doing their business ये नहीं समझ में आता किस तरीके से डिल्यूजन में रहते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता लेवेंडोस्की राफिनिया फ्रेंकी डी योंग are they will be most valued players भाई देखो लेवेंडोस्की यार देखो he is not gonna fetch a lot of money because of his age but at the same point of time wage bill से जरूर हट सकता है wages bill से जरूर हट सकता है राफिनिया is on huge wage as well फ्रेंकी डी योंग का wages सबको पता है किस लेवल पे हाई है so now I won't be surprised if they extend Busquets for one season yeah problem is very deep Barcelona's problems at this point of time it's very deep it's not about कि भाई एक प्रॉब्लम है और वो खत्म कर दो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने प्रॉब्लम है भाई इतने प्रॉब्लम है उस क्लब में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं वो फुटबॉल कैसा खेल रहा है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बार्सा ओनर्स डोंट वांट टू सेल द क्लब लाइक पीएल सो व्हाई दैट्स व्हाई दिस इश्यूज यार देखो मोर देन दैट ये ना बहुत लंबे टाइम का जैसे हमारा कैसे इश्यूज है ईयर बाय ईयर इट हैज पाइल्ड अप वो बार्सा का सेम इशू है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईयर बाय ईयर ये पाइल अप हुआ है बहुत सारे बेकार डिसीजंस पहले वाले ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट्स ने लिए हैं और जो अभी है ही इज ट्राइंग टू मैनेज थिंग्स बट एट टाइम्स लुक्स लाइक इट्स नॉट अंडर हिज कंट्रोल सो शिवाज भाई वेलकम टू द स्ट्रीम यार देखो टारगेटिंग वहीं पे होगी ना भाई देखो बिना चिंगारी आग नहीं लगती बारसा ही क्यों टारगेट हो रहा है सिर्फ मैंने मान लिया यार टेबास इज टारगेटिंग बार्सा कोई दिक्कत नहीं है मैंने मान लिया 100% बट ये सारा सिर्फ बार्सा व्हाई इज ओनली बार्सा गेटिंग टारगेटेड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नंदन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम नंदन भाई सेज बार्सा डिजर्व दिस इज डेस्टिन्ड फॉर फ्रैंकी टू बॉल इन द थिएटर ऑफ ड्रीम्स भाई आई वुड लव टू हैव हिम दैट्स व्हाई मैंने पोल भी बनाया यार जो भी पोल के लिए आ रहा है भाई पोल में डेफिनेटली अपना वोट डालो पोल में अपना वोट डेफिनेटली डालो सो भाई देखो एट एनी कॉस्ट तो नहीं बोलूंगा बट आई थिंक मैंने इस चीज के बारे में पहले भी बात किया है फॉर फ्रेंकी डी योंग आई थिंक वी विल टेस्ट देम एटलीस्ट विथ वन बिड हम एक बिड के साथ हम जरूर टेस्ट करेंगे वेदर इट्स गोना मटेरियलाइज और नॉट आई डोंट नो बट एक बिड हम जरूर डालेंगे दे आर ऑलरेडी डूम्ड भाई दे आर ऑलरेडी डूम्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई ईयर बाय ईयर इस तरीके से नहीं चला सकते तुम क्लब एब्सोल्युटली नहीं चला सकते तुम क्लब बार्टेमेओ मेस एग्जैक्टली बॉट डेम्बेले कोटिन्हो ग्रीजमैन फॉर अराउंड 400 मिलियन मैं वही बोल रहा हूं भाई ईयर बाय ईयर ये पाइल अप हुआ है वेजेस बढ़ा के प्लेयर्स ले आए
दे हैव सो मच मनी टू, और अभी भी उनको जो पुराने वाले ट्रांसफर्स है उनके पैसे देने हैं अभी इनको, पुराने वाले ट्रांसफर्स के पैसे अभी इनको देने हैं. इट्स नॉट लाइक इट्स डन भाई. आई डोंट, ये तो देखो यार, अगर नेक्स्ट सीजन बारसा इसको डालती है, मतलब इन समर इफ बारसा इज लाइक भाई तू निकल यहां से, तो मेरे ख्याल से वो सीधा निकल लेगा. अगर शर्म हुई तो. अब बिल्कुल ही बेशर्म है यार, फिर तो अलग की बात है, फिर तो अलग की बात है भाई. हो सकता है he might be a Madrid fan, might be a Madrid fan, बट मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग टारगेटेड. तुम्हारे इश्यूज हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग टारगेटेड. तुम दूसरे पे भले ही पूरा ब्लेम डाल लो यार, यू कैन ब्लेम हुएवर यू वांट, बट एज आई सेड देयर इज नो फायर विदाउट, कोई अगर उस तरीके से जला नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि तुम जाके किसी के घर में आग लगा दोगे. पेपर पे है, एवरीवन नोज. और ट्रांसफर बैन करोगे यार, ऑब्वियसली व्हेन यू हैव 200 मिलियन नेगेटिव में तुम हो, ऑब्वियसली तुम ट्रांसफर बैन फेस करोगे. सिंपल सी बात है. पुलिंग एंड सेलिंग लिवर्स वाज अ वेरी डम टेम्पररी सॉल्यूशन टू गेट फ्यू ऑफ देम रजिस्टर्ड. एग्जैक्टली. क्लब का इतना कुछ बेच के प्लेयर्स को रजिस्टर करा लिया, वापस से उसी प्रॉब्लम में वापस से आ गए नेक्स्ट ईयर. क्या बोलूं भाई मैं, ये डम चीजों की दुकान खोल के बैठी है बारसा. भाई देखो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ही बोलूंगा, एक ही चीज बोलूंगा. अगर तुम बिड मारते हो, ठीक है, अगर वो यहाँ पे आना चाहता है, मैनेजर नीड्स टू टॉक टू द प्लेयर. अगर वो बोले कि यार आई एम ओनली कमिंग बिकॉज बारसा इज गेटिंग रेड ऑफ मी, छोड़ दो भाई, देन छोड़ दो, मत लाओ ऐसा प्लेयर. सिंपल सी बात है. यूएफए लोना. एग्जैक्टली भाई, उसको बारसा का प्रेसिडेंट बनना है यार. हर किसी को बारसा का प्रेसिडेंट नहीं बनना. को बारसा का प्रेसिडेंट बनना था, इस वजह से उसने ये सारी चीजें की. ही वेव्ड ऑफ. बट और कोई नहीं करेगा, और कोई नहीं करेगा. सिंपल सी बात है. बारसा का प्रेसिडेंट पीके को बनना था भाई, और किसी को नहीं. एंड दे वांटेड मेसी. मेसी तो भाई, मेसी को तो लाएगा, मेसी फ्री में खेलेगा तभी इनका कुछ हो सकता है, वरना तो ये तो बिके पड़े हैं. डोंट वांट कुंडे, डोंट वांट कुंडे. कुंडे क्यों चाहिए भाई? व्हाई डू वी नीड कुंडे? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. भाई ये पागलों की जमात है ये. अगर कोई बोल रहा है कि भाई मेसी स्टोल क्लब्स मनी एंड वेंट टू पीएसजी, तो ये रियल मैड्रिड वाले फैंस थोड़े पागल हो गए हैं. दैट्स व्हाट आई फील. हेलो सिमोन, वेलकम टू द स्ट्रीम. No, that's for you. You don't speak for everybody. So, that's your opinion. That's fine. Move on. But I don't think it's that dead yet. Absolutely, bhai. Absolutely, Nishal, bhai. No, I'm not confident. Never confident about Anfield. Never confident about Anfield. They will show up. Those who want to call me deluded or pessimistic, they can call me that. But never confident about Anfield. It's not like we are absolutely tearing apart every opposition. No, we are not doing that. We have played well, but as I said, at this point of time, looking at the way we are playing games every second, third day, I would be more than happy to get a draw. Simple. If we win, crazy result. Crazy result. Real Madrid are not only good team, but they also have a very good financial management. Exactly, भाई. मैं तभी पेरेज की तारीफ करता हूँ यार. That's why I praise Perez. Barella is not gonna make it in Premier League. Bellingham almost double the money that Frenkie de Jong is gonna cost. Of course, they are going to play together. It's not like Casemiro is going to face a situation, ये लड़ाई आपस भाई, ये वो थोड़ी है, क्या बोलते हैं तुम्हारा पोजिशनिंग वॉर जो बोलते हैं, वो थोड़ी है. बोथ कैन प्ले इजीली. Obviously, they cannot hide. They have to sell. They have to sell. FPL, चलो भाई, FPL का तो डेडलाइन भी चले जा चुका है. जिनको ट्रिपियर बढ़िया है. It's fine भाई. We talk about everything.
Yes भाई, tomorrow 8:30 there is a watch along. चल रहा है भाई सामने. 8:30 I will start tomorrow. नहीं भाई, ये देखो, बारसा हैव सेलेबल एसेट्स. अगर उनको 180 डेज करना है, दे हैव सेलेबल एसेट्स. वो गावी पेड्री नहीं जाने देंगे, पेड्री स्पेशली. गावी तो चलो फिर भी, बट पेड्री दे आर नॉट गोइंग टू सेल. वो स्पेनिश कनेक्शन आ जाता है भाई, वो स्पेनिश कनेक्शन आ जाता है. एग्जैक्टली जमाना हो गया भाई. ऑब्वियसली दे आर मोटिवेटेड यार. अगर इफ यू आर अ लिवरपूल प्लेयर एंड इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टू बीट यूनाइटेड, doing same. If you are a United player, if you are not motivated on beating Liverpool, then what are you doing? He is not strong. Technical, yes, but he is not that pacey, and he is not that strong. He's good, you know. But when you compare him with the likes of Jude Bellingham, compare him with the likes of Frenkie de Jong, he is a level behind. He is good. He is not Frenkie de Jong or Jude Bellingham good. Why are La Liga behind Barca? यार इतना कुछ करोगे तो यार पीछे पड़ेगी ही ना. तुमने मजाक बना के रख दिया यार. तुम्हें जैसे फाइनेंशियल, तुम्हें जिस तरीके से मन करता है तुम उस तरीके से चीजें कर देते हो. Obviously they are going to be behind you. You know, you cannot just go out and you cannot just do whatever you feel like doing. We don't need him. Lol. I am just going to laugh it out. After just reading the first 3 words, we don't need him. Sorry to say, but we do need him. And we need him badly. We need him badly. Exactly, that's what I'm saying. I'm never ever confident of winning just because we are in a good form. They always show up. It's Anfield. You know, not gonna take them lightly, simple as that. Nishit bhai, welcome to the stream. No, absolutely not. There is nothing called unethical when it comes to Barca. Not for me. I'm not talking about everyone else. भाई देखो, Ferran Torres is not gonna get them a lot of money. ये फाटी के 90 मांग रहा है, फाटी के कोई 40 भी ना दे. फाटी, no one is even going to pay 40-50 million for Fati at this point of time. Alison, welcome to the stream. Thanks a lot. भाई ओवररेटेड है भाई, फालतू. पकेटा 60 मिलियन में ले आए, वर्ल्ड बीटर थोड़ी है. राइस वेरी लिमिटेड विथ नो व्हाट ही डज. सूचेक वेरी लिमिटेड विथ व्हाट ही डज. ठीक है, तो ये मिडफील्ड तुम्हारी डिसेंट है. दे डोंट हैव एनी क्रिएटिविटी. कोई क्रिएटिविटी नहीं है सच. भाई हमें एक बंदा चाहिए बस बारसा से. हमें बस एक बंदा चाहिए बारसा से. Nishit bhai, simple. Tapize bhai, welcome to the stream. Exactly, we don't have any depth. Don't have any depth. The moment Eriksen got injured, we were looking for solutions. You know, we were looking for solutions. So, yes, Firmino is going out. Roy Keane was spot on. Exactly, bhai. Limited hai bahut banda. It's very limited when we talk about Rice. और फ्रैंकी डियोंग भाई देखो, मेरे हिसाब से फ्रैंकी डियोंग का कुछ सीन अलग ही था पिछले सीजन. यू नो, इट वाज अबाउट द डिफर्ड वेजेस एज वेल, एंड यू नो बहुत सारी चीजें थी फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग. बहुत सारी चीजें थी लास्ट सीजन. आएगा नहीं आएगा, एज आई सेड, आई एम नॉट 100% श्योर. ठीक है, वी शुड टेस्ट एटलीस्ट वंस. एक बारी, नॉट मोर. ट्राई फॉर हिम एटलीस्ट वंस. इफ इट्स नॉट कमिंग इन, फाइन. इवन स्कमाका, आई थिंक मोइज ने ना उसको यूटिलाइज नहीं किया प्रॉपर्ली. मोइज ने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया प्रॉपर्ली. और एनीवन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, पहला सीजन ना, उसको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है. इवन दो ही इज नॉट गेटिंग यू द नंबर्स, उसको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है. बट वो नहीं किया. एनी एशियन प्लेयर, किम जिन में आई वुड लव, यू नो, एज अ बैकअप सीबी. मिटोमा टू अर्ली टू बी वेरी ऑनेस्ट रतन भाई. He is doing well, but I won't, you know, make him sit on the bench. He is not going to start for United at this point of time. So, I said that the moment they made that move, I said it's an absolutely rubbish move.
The moment they made that move, I said they have paid out of the box for a rubbish move. देख लो भाई, देख लो. Frenkie de Jong and Casemiro will be the Premier League's best midfield alongside Bruno. Simple as that. By Roy Keane, when he talks sensibly, na, he makes a lot of valid points. You know, but हाँ, उसका वो बार-बार आ जाता है ना, that egoistic nature of him, that what he used to do, others need to do as well. वो चीज नहीं होएगी यार at this point of time. You know, वो चीज नहीं होएगी. So, Praful bhai, welcome to the stream. Guys, जो भी आ रहा है, keep liking, sharing and subscribing. That's a lot. मैंने tweet भी डाल दिया था. Those who can, you know, see that tweet, they can come in as well. So, एक second दो guys. I know there is a lag. एक second दो. I am getting rid of the lag. Getting sorry. No more lag would be there. अब नहीं होएगी lag. I believe Jamie Jackson, but not that Fred Alex Crook. Alex Crook works. Alex Crook works for क्या यार वो जो हमारे अगेंस्ट एजेंडा चलाते रहता है, टॉक स्पोर्ट. You know, he works for टॉक स्पोर्ट. क्या सीरियसली लेना भाई? क्या सीरियसली लेना? At the end of the season, we were a mess. It's understandable. भाई ऐसा फालतू की रिपोर्ट है. I think it's a rush report कि भाई अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, ये स्ट्रीम ही फ्रीज हो गई. भाई एक सेकंड रुको यार.
चलो भाई, finally. Sorry guys, really sorry for the trouble. See, that's what I'm saying. At this point of time, just saying कि भाई हमें बंदा नहीं चाहिए because we are on a good run, makes no sense to me. मुझे सर उसका कोई लॉजिक नहीं लगता. We have seen that कि भाई एक इंजरी होती है and we are looking for solutions. ठीक है, that happened in the Ericsson case as well. Thankfully we went out and we got the job done as soon as possible. Very quickly we got the job done. But it's not like कि भाई तुम वो चीज बार बार कर सकते हो. You cannot do that time and time again. चलो भाई, we continue. Sorry भाई, लैपटॉप ही क्रैश हो गया था. मेरी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहती है भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत है. Anyways, so as I said, Frenkie de Jong we can definitely target at this point of time because हमारे लिए वो बेस्ट चीज है कि we can go out and we can get someone like Frenkie de Jong. I am not saying कि भाई over the pay करो, over the top pay करो. I am not saying that go out and we need Frenkie de Jong तो 120 दे दो. No, don't do that. 75 जो पिछले साल we agreed, pay that much. Not more than that. Pay that much. Simple as that. मैं वही बोल रहा था भाई, when we need a cover, that's what I'm saying. That people are talking about Sabitzer. कि Sabitzer रख लो, we are done. Sabitzer is good. People are saying Ericsson. Ericsson is not going to give you 90 minutes or he is not going to play 3 games in a week. That's not possible for Ericsson. We all know. So we have to be very, very realistic and opportunistic in the market. Simple as that. As Alisson is saying, too many games for United current squad and they have done very well not to get many injuries. Exactly. That's what we are talking about. Building 2 teams. Building the teams from where you can get the job done with the players. Simple as that. भाई मेरे लिए definitely पहले striker उसके बाद CM. Striker और CM, these 2 positions we need to definitely get in the next market. Simple as that. इसके बिना तुम प्रीमियर लीग के लिए जा ही नहीं सकते. You cannot go out and try to win the Premier League without a striker, without a CM. That's what I feel. स्वप्निल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. लपोटा शादियों के साथ साथ बेबी शावर. ओ भाई साहब, I didn't see this coming भाई. We should not go for भाई देखो, ट्रांसफर में मैं टाइम वेस्ट करना नहीं बोल रहा. I am not saying that go out and waste the transfer. एक बिट डालो, just ask the player whether he wants to come or not. Simple सी बात है यार. He is on the sell list, सबको पता है. Everybody knows. Just ask the player whether he wants to come or not. If he says no, खत्म करो. Don't waste time. Time waste नहीं करना. We have to keep on moving. Time waste करते हैं तो फिर उसके बाद हो गया काम. That we cannot do. भाई मेरे हिसाब से see, I don't consider Jude Bellingham कि भाई 150 दे दो. But if he's available for somewhere around 120, we should definitely try for Jude Bellingham. Simple as that. Jude Bellingham try करना चाहिए भाई साहब. Otherwise keep Sabitzer. Sabitzer तो फिर 100% sure रखो उसको. And try to build around, try to bring some more pieces around him. हरकोजीत भाई, welcome to the stream. भाई 90 मिलियन घंटे का नहीं दे रहा कोई उसको. No one is going to pay Barca 90 million. Simple as that for the mess they are in.
For the mess they are in, no one is going to pay them 90 million. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई नहीं देने वाला भाई, 90 मिलियन कोई नहीं देने वाला. एड-ऑन्स वगैरह लगा के शायद, but apart from that it's not gonna happen. भाई देखो इजीली कुछ नहीं है, but बारसा is in, बारसा in trouble, everybody knows that. हाँ, वो फ्रेंकी डियोंग सेल ना करे, दूसरे प्लेयर सेल करके दे रेज द मनी, that's on them. Barca are not in a good negotiating position. Exactly, they cannot negotiate. उनको भाई देखो, तुम 70-75 कर सकते हो, you cannot ask for 90 or 100. If you are asking 90 million for likes of Fati, तो भाई तुम्हें घंटा नहीं मिलेगा कुछ. नहीं भाई, डेली मेल is not reliable. डेली मेल is not reliable, guys. See, ये सागा फिर से चलेगा यार, ये सागा फिर से चलेगा. Barca not going to get out of this mess that easily. और हमें फ्रेंकी डियोंग चाहिए था, मैनेजर wants it. So it's not like कि हम बस जाएंगे और चीजें बेटर हो जाएंगी. It's not gonna happen. कि हमने बस एक बिड मारी और वो आ गया. बट हाँ, जो करना है जल्दी करो इन ट्रांसफर मार्केट. Because pre-season, the moment the pre-season is there, you need to have all the players that you really want to be in the squad. सिंपल सी बात है. भाई ट्रांसफर बैन तो होगा. If they are not able to raise money, then transfer ban होगा. अरे भाई उनको wages निपटाने हैं. They have to get rid of 180 million. वो सेम स्क्वाड के साथ पॉसिबल नहीं है. Swapnil Bhai says about time wasting on transfer. Exactly, मैं तो कब से बोल रहा हूँ भाई. अरे Venkatesh bhai, welcome to the stream. Thanks a lot for joining. You have come at a time where the lagging is gone. I was out cold for 5 minutes because my laptop crashed. What do you think about our situation? Which situation, bhai? Chandan bhai, which situation? Exactly, just tabloids. Bhai, Gimaresh is not United starting quality. रियल मैड्रिड से ऐसे ही ब्रिटिश का किसी टैबलॉइड ने दे लिंक्ड हिम विद रियल मैड्रिड. नेवर. रियल मैड्रिड और स्पेन से कभी कोई न्यूज नहीं आई कि भाई दे आर इवन इंटरेस्टेड इन ब्रूनो गिमारेश. भाई आई थिंक यू गाइज नीड अ कंप्लीट ओवरहॉल. Not complete, but definitely you guys need 2-3 players in the next window. You need to freshen things up. The way you guys keep on losing to Barca this season, and they are not even that strong. We have shown it. They're not even that strong. But you guys at this point of time are very static in what you are doing. So you guys need to make some adjustments. You guys need to bring some new players in the transfer market. And then attack the next season. I think this season it's going to be Barca's trophy. And I don't have, and even though I don't count out Real Madrid in the Champions League, I think it's going to be very difficult for them to win the Champions League this season. So, Swapnil bhai, welcome to the stream. Thanks a lot for joining in. Guys, whoever is joining, please like, share, and subscribe. That helps a lot. And thanks a lot for staying in, even though there was absolute shutdown for 5 minutes. Because my laptop crashed. So really, really thanks. And guys, मैंने poll link डाल दिया यार. Please make sure that you guys share the poll as well. Oh, sorry, vote in the poll and share the stream link. That would be great. आएगी भाई, 100% आएगी. मिलिंकोविच साविच की न्यूज़ फिर से आएगी. Venkatesh bhai ने share किया when in the first day of training he wanted to go in a van with his own. Bhai, he see, that's the sort of character we needed, because under Ole players had a free hand. भाई सब कुछ इंक्लूडेड है. उनको 180 मिलियन कैसे भी लेके आना है. मोस्टली जो पंगा है वो
सैलरी का ही है, मोस्टली जो पंगा है वो सैलरी का ही है। जहां पे दे आर हैविंग सो मेनी प्लेयर्स एंड उनका सैलरी कैप जो है, दे हैव एक्सीडेड द लिमिट्स। you cannot keep on doing that every season. Of course, bhai, they have to sell. They will sell a lot. Sanit bhai, you know what you have to do. चलो फटाफट। बहुत सारी चीजें करनी है भाई। कल यू डिडंट जॉइन द मेंबर्स ओनली स्ट्रीम, कल तो दंगे हो गए थे मेंबर्स ओनली स्ट्रीम पे भाई। अलग अलग लेवल की बिडिंग चल रही थी कल। लिस्ट भेजूंगा मैं बाद में, ये स्ट्रीम के बाद। बट या कमिंग बैक रतिन भाई, definitely didn't have to sell. Chelsea, exploited the FFP loophole. What they did, lamba contract दे दिया. They gave everyone big, long contracts. Now under FFP you cannot give a contract more than 5 years. So Chelsea वहां पे वो अच्छा खेल गई, to be very honest. Not only 2-3 players अगर मंगवाऊं, बिल्कुल भाई, मैं तो स्टार्टर की बात कर रहा हूं। भाई इनको इंटरेस्ट तो सब में है, बस पैसे नहीं है। दे आर द पाकिस्तान ऑफ ट्रांसफर मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चाहिए सब कुछ बट पैसे नहीं है। भाई कल के बारे में मैं कल ही बात करूंगा स्वप्निल भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल मैंने 8:30 की स्ट्रीम रखी है, उस पर बात करूंगा। मेरी अभी फटी पड़ी है मैच के बारे में बात करने पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनफील्ड पे जाना है, दोज हु आर थिंकिंग दैट इट्स गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क, ऐसा नहीं होने वाला भाई। इट्स नॉट गोना हैपन। मैंने लिंक भेजा था, मैं समझ गया था, थोड़ा लेट था फॉर यू वेंकटेश भाई, सो आई थॉट सो यू वोंट बी एबल टू ज्वाइन। वही तो इनके प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है भाई। इनको बहुत बहुत तगड़ा ओवरऑल चाहिए। रियल मैड्रिड को भी चाहिए और बार्सा को भी चाहिए। भाई मैं भेजूंगा कल के कुछ वो स्टैट्स भेजूंगा मैं कल, सोनित भाई, आफ्टर द स्ट्रीम फॉर श्योर। गाइस, please, as I said, keep liking, sharing and subscribing. Those who are joining for the first time or the net time, so as I said, when you are on the channel, everything you do helps. So bhai dekho, I will be very very optimistic going into the game, but मैं overconfident नहीं हूँगा. I am not going to be overconfident and say that we are going to Anfield and we are going to absolutely thrash Liverpool. That's not going to happen in my opinion. That's what I feel. Although they are not having the great season, but at Anfield, against your biggest rivals, they are going to show up. And that goes without saying. भाई 5 मिनट एक कमेंट करके चले जाना, प्रेजेंस हो जाएगी काउंट। Samuel Umtiti fan in the house, welcome to the stream man. भाई सोशल मीडिया इज लाइक दैट। कोई बोल रहा है he will never consider him, कोई बोल रहा है कुछ भी, स्पोर्ट्स बाइबल बोल रहा है भाई इंटरव्यू होगा विद एरिक टेन हाग, रिचर्ड आर्नल्ड। लोग कुछ भी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, डोंट लिसन टू ऑल दिस। जिसको एजेंडा चलाना है वो चला रहा है। जिसको जिस तरीके से एजेंडा चलाना है, दे आर डूइंग दैट। कोई बोल रहा है आएगा, कोई बोल रहा है मैनेजर के साथ इंटरव्यू होगा, कोई बोल रहा है भाई रिचर्ड आर्नल्ड। कल को आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ समवन कम्स आउट और बोले भाई ग्लेजर्स भी साथ में बैठेगा फॉर द इंटरव्यू। कोई कुछ भी बोल रहा है, छोड़ो। सोनित भाई थैंक्स अ लॉट। एवरीवन गिव सुपर चैट, गेट द मेंबरशिप। बिल्कुल भाई, वी विल हैव टू बी रेडी टू फंड द डील। हमें चाहिए भाई बार्टिमेउ ने बिल्कुल बर्बाद किया है भाई बारसा को। वी हैव अ बारसा फैन इन द हाउस, आदित्य भाई इज अ बारसा फैन। और भाई यूट्यूब नोटिफिकेशन बिल क्यों रखा भाई, मुझे लिटरली नहीं पता। आई हैव नो आइडिया व्हाट दे डू विद द बेल।
कोई बात नहीं भाई, वो तो सैमुअल एंटिटी फैन मैं समझ ही गया कि भाई बारसा फैन। भाई फेक क्या पेलना, दुनिया के सामने है पूरा सारी चीजें, इसमें फेक की क्या बात है। बोल दो कि नहीं है तुम लोग 200 मिलियन अंडर द वेदर, एवरीवन नोस। हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ इट, दैट्स टू बी सीन। बट ये बोलना कि भाई क्या फेक पेल रहे हो, भाई दुनिया को पता है तुम्हारे लगे पड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ छुपाने वाली बात है, ना तो तुम्हारे बोर्ड मेंबर्स ने छुपाया है। हाँ, हाउ आर यू गोइंग टू रेज दैट मनी, वेदर यू नो गेट रिड ऑफ द प्लेयर्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्क्वाड, उससे तुम सैलरी कैप मैनेज करो। ट्रांसफर बैन की अभी श्योरिटी नहीं है। आई हैव नेवर सेड दैट बारसा इज एब्सोल्युटली ट्रांसफर में बैन हो गया उनका, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इफ यू आर नॉट रेजिंग दैट मनी यू माइट गेट बैंड, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। भगवान जाने देते भाई, आई एम रियली फेड अप ऑफ। देखा है भाई कुछ आफ्टर फुल टाइम विशल वाला कुछ सीन हुआ है, मैंने पूरा नहीं देखा है, मैं देखूंगा। मतलब केरला ब्लास्टर्स एब्सोल्युटली लॉस्ट इट, लास्ट मिनट में जाके गेम हारे हैं, तो दे आर कंप्लेनिंग एंड ऑल, सो वो सब देखा है मैंने। भाई वो बारसा फैंस का डिल्यूजन अलग लेवल का है ना, बारसा फैंस का डिल्यूजन अलग लेवल का है भाई। वेंकटेश भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए हैं, तो भाई जिनको भी मिला है कांग्रेचुलेशंस, दोज हु वांट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट प्लीज डू दैट, ठीक है। 5 मेंबरशिप दिए है भाई ने, आई थिंक 5 लोगों ने ऑलरेडी ले लिए हैं, सो कांग्रेचुलेशंस दोज हु हैव ऑलरेडी got the membership. Please make sure that you are filling up the form as well, please make sure of that. भाई वही मैं बोल रहा हूं ना कि बैकडोर चैनल्स भी एक लेवल तक तुम लोग का चलेगा, बैकडोर चैनल्स एक लेवल तक चलेगा, उसके बाद द वर्ल्ड विल सी कि भाई किस तरीके से चीजें हो रही हैं। सो गाइस, एज आई सेड, थैंक्स टू वेंकटेश भाई, मैं भाई पर्सनली थैंक्स बोल देता हूं, मेंबरशिप ही हैज गिवन अवे, सो it's fine, Alison. Hopefully we will do it again very shortly, very shortly. Bye Sangeet bhai, thanks a lot for joining in. Ratin bhai is saying, bye for our FA Cup, people are underplaying our cup run opposition. भाई देखो, when you play in a FA Cup ना, ठीक है, तुम्हें कुछ मिल सकता है, we could have got City, we could have got City, सी बात है, we could have got City, we could have got anybody, we got Fulham, प्रीमियर लीग टीम है यार, प्रीमियर लीग टीम है, you cannot just come out and say कि भाई बिल्कुल ही नल्ली टीम है, ये सिर्फ उन्हीं को, उन्हीं के लिए है। सो अरे भाई तुम्हारा बोर्ड उसको 100 मिलियन नहीं बोलता, हम क्यों दे 100 मिलियन, तुम्हारा बोर्ड उसको 100 मिलियन का नहीं मानता, हम क्यों दे 100 मिलियन, सिंपल सी बात है यार, लॉजिकल बात करो, नथिंग अगेंस्ट बार्सिलोना, बट लॉजिकल बातें करो, 100 मिलियन दे दो भाई, 100 मिलियन तुम्हारा बोर्ड नहीं मांग रहा फॉर फ्रैंकी डी जोंग, दे आर सेपरेट 75 मिलियन डील। हाँ, एड-ऑन्स वगैरह मिला के दैट वाज गोइंग, बट वो एड-ऑन्स भाई सालों में होते हैं, वो एड-ऑन सालों में होते हैं। चलो कोई बात नहीं रतन भाई, एज आई सेड फैमिली टाइम इज इंपॉर्टेंट, सो वेंकी भाई बारसा को भी फंड कर दो। भाई they will see every time we got a cup run like that ना, उनको they used to think that we don't stand a chance of winning it, they always thought that we don't stand a chance of winning it, now they are afraid, they are like no, you have a chance of winning it, so भाई चलो थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलाई जाए। so भाई see, United and Madrid, they have a relationship from generations, जो टीम अपने अपना सबसे लीथल बंदा देने को तैयार हो जाए, so that we can complete our season after the disaster that we faced, 1958 में, they were giving us Puskas, वो तो उस टाइम पे वर्क परमिट वगैरह का नहीं हुआ, he could not play for us, but they were willing to give us Puskas at that point of time. So our history on the field, why we are rivals, but off the field
ऑफ द फील्ड भाई देखो हमारे the way we have dealt in the transfer market as well, Real Madrid and Barcelona, Real Madrid and United. बार्सिलोना तो यार सिटी इसलिए है क्योंकि वहां पे पेप है, वहां पे सिटी के साथ इसलिए है बार्सा फैंस बिकॉज दे हैव पेप ओवर देयर. पेप चले जाएगा तो बार्सिलोना फैंस का जो सिटी का जो बोलते हैं ना लव वाला एंगल है वो खत्म हो जाएगा. Exactly. So we have a historic relationship, Arpajit bhai. It's not just about this season. It's not about just 2-3 seasons in the past. Or when we have played in the Champions League, we have been at the end of bad results as well. We all know that we were robbed at Old Trafford the season that that red card for Nani. So, well, yeah. Exactly. That's why that mutual respect is there. They played friendlies. Exactly. They have done a lot of things at that point of time. And even from having, from Ronaldo to Beckham to Ruud van Nistelrooy, now we have Casemiro, we have Varane. In future, you never know, we might have Vinicius or someone like Valverde. I'm just saying. So at this point of time, we have to keep that everything in the mind. Everything in the mind. See, Ronaldo's dream was to play for Real Madrid. He got us good money. David Beckham, we all know what happened with Ruud van Nistelrooy. We all know what happened. So, मैं तो वर्ल्ड कप के बाद से फुटबॉल देखना ही बहुत सारे लोग हैं भाई वैसे मेसी completed फुटबॉल और उसके बाद बहुत सारे लोग निकल गए. बट वही यार those who are coming on the channel feel fair to share your views, but as a delusional वाली बातें नहीं यार. Back it up with facts. ठीक है. So भाई उन्होंने दिया नहीं है यार, हमने नेगोशिएट किया है. उन्होंने दिया नहीं है. It was on the manager. The manager wanted to come. So भाई प्रीमियर लीग शुरू होएगा यार 45 मिनट्स में. I will be here till the next 45 minutes. उसके बाद भाई प्रीमियर लीग एंजॉय करेंगे. And tomorrow 8:30 it's on the banner. Those who want to connect on different social media handle, that would be great. नहीं चाहिए भाई बेंजेमा, चाहिए ही नहीं. बातें क्या खत्म. शॉर्ट टर्म फिक्स करना ही नहीं है भाई. 1 साल के लिए ले लो, उसके बाद फिर ढूंढते फिरो और उसे 1 साल में बंदा कोई और चले जाए. करना ही नहीं है ये चीज. चलो, थैंक्स फॉर Aditya भाई. I hope that he will play a part, but मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. Coming back from that sort of an injury, pre-season is going to be very crucial for Donny van de Beek. Donny के लिए pre-season बहुत crucial है. So whether he is going to be a part of next season, वो तो बात की बात है. Pre-season जो है इतना ज्यादा crucial है that we have absolutely no idea. It's a make or break for him. भाई मैं वही बोल रहा हूँ, बेंजेमा चाहिए ही नहीं यार. Absolute killer of a player, but we need young players. Simple सी बात है. No 30+, absolutely. भाई देखो सिटी जीतेगी. I think Newcastle against City. Although Newcastle have done well in this year, but it's not like they have won against the top teams. They have not done that. बहुत सारे draws हैं. I expect City to win today. I am not saying it's going to be an easy win or a hammering, just like City used to hammer Newcastle before. वो चीज नहीं होगी, but I think City will win. And to be very honest, City wins से हमें ज्यादा फायदा है. City wins से हमें ज्यादा फायदा है because we are more in the race for top 4 than we are in the race for title. और हमारे पीछे just Spurs और
Newcastle. We need a striker. We need a finisher. At this point of time, all our goals are basically coming from Rashford. Others, they have not contributed a lot. So we need a finisher. More than anything else. भाई एल क्लासिको तो यार मजाक हो गया है. To be very honest, एल क्लासिको was at its peak जब रोनाल्डो मेसी थे. उसके बाद से तो एल क्लासिको तो मजाक ही चल रहा है. भाई मैं भी बोल रहा हूँ ना, एल्वारेज ले लिया होता तो भाई प्रॉब्लम क्या, वी कुड हैव अ स्ट्राइकर फॉर एटलीस्ट 9-10 years. 18 million में अवेलेबल था यार. As I said, I have said on the stream, I was not a huge fan, because we have seen कि भाई लोग उधर से आते हैं, but when it comes to United, they don't perform. But Alvarez, I think, and भाई देखो उन्होंने Alvarez जल्दी snap इसलिए किया ना, because they know कि हालैंड जो है, he is not going to stick. हालैंड नहीं रुकेगा उनके साथ. हालैंड will leave. करो भाई. मेरा ये जिंक्स चलता है कैप्टन और ट्रिपल कैप्टन के साथ. जिसको करूंगा वो साला पक्का फ्लॉप करेगा. There is absolutely no doubt about that. 0 shots on target, definitely. मैं वही बोल रहा हूँ भाई, it was absolutely diabolical from Real Madrid. भाई तो वही है ना, no shot on target. It's not like they created chances, but they didn't create chances. Barca got the result they wanted. Barca को तो रिजल्ट चाहिए था, वो उनको मिल गया. कर दो भाई, कर दो बिल्कुल. और वाइस कैप्टन बना देना मार्टिनेली या फिर किसी और को. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी विन यार. आज तो आर्सेनल वाला मैच देखने का भी मन नहीं है मेरा. दे आर गोइंग टू थ्रैश बोर्नमथ. बोर्नमथ, दे आर नॉट इवन अ कंपटीशन. मार्शियल शुड बी सोल्ड. एलिसन 100%. वी शुड लेट गो ऑफ मार्शियल, मैग्वायर, ट्यूनजेबे, जोन्स ऑब्वियसली. As I said, I would love to keep McTominay, but if we are getting a good bid, then let go of McTominay as well. We need to let go of so many players, but I don't see it happening in just one summer. We might have just to wait for a bit more time. So we will see how we end up with it. See, Mason, I think it will be terminated. See, the tweet that a very prominent Qatari guy did. Alison, he was talking about that in all fairness, they United might terminate Greenwood's contract, overall. Because people were asking him whether he is going to play for United or not, and he said United might end up, terminating the contract. But yeah, obviously he's talking about if the new ownership gets in, So let's see how that goes, because that guy, whatever he says happens when it comes to Qatar. He's very close to the Qatari royal family. He goes by the handle of Qatari on Twitter. So if you guys want to have the latest news close to the takeover, you guys can follow him, So, ये Old Trafford पे, he has more appearance for BT Sports than the club in the last few months. Not even few months, last few years. क्या ही बोलूं भाई, क्या ही बोलूं. Tomorrow I will see you, as I said, 8:30. Obviously, it's a huge game for us. As we all know, it's going to be huge. आज ये stream इसलिए करना था यार, देखो Saturday, Sunday is mostly family time. ठीक है, तो मैं ज्यादा stream पे उस time पे focus करता नहीं. I wanted to do it because ये बारसा वाली news आ रही थी. They might get the ban, they might not get the ban. So I wanted to do it, in order to at least make the streams going. Even though as I keep on saying, yeah, for me, if the views gets in,
brilliant. If it's not, but we are having a very good discussion, that works for me as well. So if I keep on Maguire and Martial, very difficult here, but at least one guy is fit enough to play. That's what I'm going to say. I'm just going with the fitness thing. So I will keep Maguire. People might bash me for that, but I'm just going because he will be available to play. If Martial is not injury prone, Martial any day, it's not even a question then. Qatari said wait for 30 March. Exactly. He is already saying, wait for March. Wait for March to finish. He is very confident. Or kisi ke saath, I have not seen that much confidence. With the Qatari, that guy, he is very confident that it's gonna happen. So we will have to wait and see how it goes. But that guy is very confident at this point of time. That's definitely gonna happen. Definitely gonna happen. So we will have to wait and see. We will have to wait and see how that goes. Even Ornstein, when the initial news came in of the takeover, Ornstein said it's gonna take a lot of time, and expect it to happen by the end of the March. So we as United fans at this point of time, we are just waiting for that. We are just waiting for that. So we will see how that goes. Exactly, that's what I'm saying. I have nothing against Martial, but obviously you need to be fit, in order to play. At least you need to be fit in order to play. That's my biggest issue with Martial. Talent-wise, it's not a problem. We all know the talent is there, man. We have seen glimpses of it. Unfortunately, we have just seen glimpses of it. So there is nothing that's gonna make me say that, we should keep Maguire based on talent. No, bhai. It's absolute delusion if I say that. But I do feel at this point of time that Martial is done at the club. You cannot expect to be playing for a top club on such a high wage and just not taking care of the body. I don't know what's the mystery behind his injuries. No one knows. Even the manager said at times, we have no idea what happens. But we cannot go into a season and we are like, what, this is it. We have Martial as our striker and we are going to keep him for the end of the season. We cannot do that. Imagine if we didn't have Weghorst in the winter. Where would have been? Now that we have Weghorst, we have a body, a player who can play different roles. He has already shown us that he can do it. So when it comes to United, when it comes to the players that we are trying to sign, definitely going to fit the ideology and the mentality that the manager wants. We are not just going out and picking anybody. It's not going to happen. And our manager at this point of time is strong enough to go out and say, all right, I don't want this player. I don't need this player. Give me the names that I want. Otherwise, we wait. भाई अभी सस्पेंस बाकी है भाई. अभी सस्पेंस बाकी है. आर्सेनल वर्सेस सिटी बचा है. आर्सेनल के भाई टॉप गेम्स बचे हैं अभी. They are in a very good position. ठीक है. They are in a very good position. They have a 5-point lead, but City से हारे 2-point lead. They get something out of the City, then it's 80% done for me. Then it's 80% done. Bhai, the way we are playing, we are going to get, we are going to look for the win. There is no doubt about that. But beating Liverpool at Anfield is a totally, new task. Sorry, totally tough task जिसको बोल सकते हो. Even though we are performing better than them at this point of time, cannot take them lightly. Liverpool is not going to destroy anybody. Liverpool is not destroying anybody. Simple as that. They are not the Liverpool of past few years that used to keep on, now they fade away. They fade away.
I am not saying that they won't put up a challenge. I'm just saying there is no destruction coming from anybody. So exactly, bhai. Exactly. भाई, and I think even Chelsea would love to spoil their show. मैं एक बार देखता हूँ, शायद इनका चेल्सी, हाँ, न्यूकासल है, चेल्सी है. Even Chelsea would love to spoil. Chelsea knows they're not going to win, but they would love to spoil them. No, spoil their party. So जा सकते हैं भाई. New owners के साथ everything is a possibility. With the new owners, everything is a possibility. Yeah, and we have not seen the best out of their midfield. You know, Salah definitely is going to be a problem. Nunez definitely is going to be a problem. वही भाई, मैं तभी बोलता हूँ 13 गेम्स बचे हैं भाई. 13 games, 1/3 of the season remains. As I said, 5 points at this point of time looks very good. You know, but they lose against City and everything is on a shaky ground for them. So, bye, good evening. Potter becomes a legend instantly. As I said, bhai, you know, he will try to get something out of the game. अगर हरा दिया तो फिर तो भाई पॉटर को एक्सटेंशन दे दो. Give Potter the extension. But yeah, what I feel that definitely favorites अभी तो Arsenal ही है, because we have not seen the best of City. You know, हमने City का best नहीं देखा. So let's see. Everyone is laughing at Chelsea, but you know, as I said, under a new manager, Alisson, I think there will be a very good team. They have made quality signings. It's just I don't think it's the signings that Potter wanted. You know, they are good players, but they are not the players that Potter wanted, and that's the problem for them. You know, that's a huge problem for them. If these are the signings that Potter wanted, it would have been a totally different. You know, look at Mudryk. He keeps on sitting on the bench, and they almost paid 100 million. It's like Potter is saying that, you know, I didn't want this guy. I am not gonna play this guy. You know, that's how it looks at this point of time. So we will have to wait and see. But under a new manager, I think they are going to cook. You know, I am not going to say that they are going to win the Premier League immediately, but we have seen with Chelsea, you know, they get instant success with the new managers. You know, instant success with the new managers. So we will have to wait and see. We have to wait and see how it goes. Ashwin, how are you? I'm absolutely fine. Chelsea should try Felix. भाई वो कहीं पे भी खिला लो. Felix is not a finisher. गोल्स कहाँ है भाई? 25 गोल है भाई. बंदे के 25 गोल है 3 साल में. He is not a finisher. Absolutely sucks at finishing. See, we were robbed of points. We were robbed of points against Newcastle, against Arsenal. I think that should have been a draw. Against League, against Crystal Palace, you know, where McTominay's penalty was not given, clear-cut penalty. So yes, consider those 5 points, we could have been in the mix, but it's fine. As I said, before the season started, I had hoped for a top 4 finish, and even if we get a domestic cup, which we have already got. Thoughts on Rooney praising the Glazers? Vaishnavi, welcome to the stream. We have talked about this, and I have no idea why he got the, why he praised Glazers. I have absolutely no clue. He must have been high or something. Because apart from that, I don't see a reason. Why he will come out and praise the Glazers. You know, I have absolutely no idea. Exactly, bhai. VAR तो देखता भी नहीं है. VAR is absolutely rubbish when it comes to United. 200% penalties.
100% penalty. नहीं भाई, absolutely not. ETA need learning. You know, वो उसने कल से मैनेजर नहीं बनाया वो. His substitution in few games, definitely you can say, but still we should have got the job done with the players that we had on the pitch. Maybe Alisson, because that came as a shock. You know, that came as a shock that Rooney, out of all the people coming out and praising the Glazers. That's a good theory. That's a very good theory. Most probably the case. ETH is our world, right? I never predict Ashwin bhai. I never predict. And guys, tomorrow I will see you at 8:30. The stream will start at 8:30. Already मैंने डाल दिया भाई stream. Make sure that you already put the notification on. I have already put up the stream details. Tomorrow 8:30. I will definitely see you guys. I never predict भाई. जिसको prediction करना है आज कर लो. Tomorrow you guys can join the stream. Tomorrow you can predict as well. But I never predict. You know, मैं नहीं जाता कि भाई. Whenever I do that, you know, I jinx. So I stay away from predictions. They are ready to accept. I think the poll confirms that. Vaishnavi. Obviously, United fans would love to have Frenkie de Jong if he wants to come. If we have to try for 2 months, then I don't think any United fan wants him. You know, that's what I feel. Blame the Glazers. Obviously, Glazers will be blamed for everything. If you want to run a club, you have to make sure that you are putting the right personalities at the club. Simple as that. भाई कांग्रेस सारे थैंक्स बोल दो भाई जिसको भी मेंबरशिप मिली है. It's courtesy of वेंकटेश भाई and courtesy of अंकित भाई as well. So हाँ, ज्यादा नखरा नहीं चाहिए. सिंपल सी बात है. Actually, we don't need extra, negativity at the club. Already we have with the owners. We don't need with the players. $100%. Frenkie de Jong, Casemiro, Bruno Fernandes, best in the Premier League. Best midfield in the Premier League. That goes without saying. If we get these three to play together, best in the world. Best in the Premier League for sure. भाई नहीं है भाई, almost half है. Frenkie de Jong is around 80 million. Almost double का फर्क है भाई. Raya. I don't want to pay 75 for Diego Costa at this point of time. Raya, better than De Gea in every aspect at this point of time. We cannot go as De Gea as our number one next season. Simple as that. By the way, how is your mama? Please keep me updated as well. And thanks a lot for joining in. They won't. They have already talked about so many changes. It's not going to be same. That's why they want the controlling powers. That's why they say that we need the making abilities. You know, that's why they keep on saying they need the decision-making abilities and not willing to take the minority stakes. They want 51% minimum, where they can take the decisions on their own. You know, it's not like they are settling for less. They want to change everything. Raya has been brilliant, and he is going to cost us pennies for a keeper like him, 15 million. Pennies. आ जाएगा. Fingers crossed and praying. आ जाएगा. Hey Malin, welcome to the stream. So that's what I'm saying. Raya है,
Diego Costa, we can definitely look at Diego Costa, but he will cost 4 times more than Raya, almost 5 times, because Raya is 15 to 20, and we know for a fact that Diego Costa would be 75. Raya passing to Rashi. Definitely. Oh, bhai sahab. Shots fired. Qatar coming and keeping same bodies as likely as Pakistan having money. Bhai, shots fired. But yeah, as we all know at this point of time, it's not going to happen. It's absolutely not going to happen that they keep the same board. They won't make that mistake. I don't see that happening at all. At all. See, that's how the manager wants to play our football. But he needs to understand the times, and he has understood that we cannot play from the back with the hair in goal, and he has changed it, in certain games. But we still try that. So hopefully, not for a long time in the next season. भाई मैं ये इसकी बातें तो करूंगा ही नहीं यार. At this point of time, I will happy with a 1-goal win. I will be over the moon with a 1-goal win. Simple as that. CEO Edwin van der Sar, DOF Paul Mitchell, Sporting Director Nick. भाई अगर ये कर दिया हमने तो क्रेजी सीन हो जाएगा. तो जो ओवरऑल बोलते हैं, that would be complete if we manage to do this. Exactly. ATH का फिर देखा कोमन भाई. Ajax के लिए every season they have to win the trophy, and at times you won't win it, but then you have to play a certain standard of football, which Schroeder was not playing. So when you are not playing the way the fans want you to see, you are gone. Simple. एक गोल तो ट्रेंड फ्री दे देगा. भाई इसको कुत्ता बना दो यार फिर से. इसके अगेंस्ट when he makes a mistake, मुझे जो खुशी मिलती है ना यार, you have no idea. When he makes a mistake, मेरे खुशी का जो लेवल है, that's more than anything else. मतलब इसको जितना लोगों ने हाइप किया था, when I see him, fucking around, that would be crazy. लिवरपूल की ऐसी तैसी करा दे from the back, that would be great. Hopefully Shaw is back tomorrow. We have not heard anything where he won't be there. So hopefully he is back tomorrow. Sridhar bhai, welcome to the stream. भाई नोटिफिकेशन ऑन कर लो श्रीधर भाई. सैटरडे संडे तो आ ही सकते हो. आई नो बाकी टाइम यू हैव वर्क. I can understand that. So best right back this head. भाई डिल्यूजन का कोई ऑप्शन वो नहीं है ना. डिल्यूजन किसी को भी हो सकता है. भाई बेइज्जती नहीं भाई. फैक्टोस भाई सारे आते हैं. You are not here, so always.
Nitish, as I can see from your name itself, Crazy Gunnar, you are an Arsenal fan, but yes, backing Liverpool to beat. Obviously, as an Arsenal fan, you would love to see United getting, beaten up, and Newcastle can get something out of. If Newcastle can get something out of the game against City, it's your title to lose. Simple as that. Simple as that. At this point of time, you are in a very good position. It's not secured yet, but in a very good position. So let's see how that goes. That's another delusion. That's another delusion that he can play, on the wing. He can play in the midfield. The role that's given to him, he cannot do that. But yeah, apart from that, he can do everything. He can play better than Sancho on the wing. He can play better than Scholes in the midfield. He will be a more lethal number 9 than Rooney and more lethal number 9 than RVN, RVP. But हाँ, जो उसका जॉब है भाई वो नहीं कर सकता बस वो. He cannot play as a right back. उसके अलावा वो स्कोल से भी बेटर है, वो रूट से भी बेटर है, वो वैन पर्सी से भी बेटर है, वो सांचो से भी बेटर है, वो सबसे बेटर है. He can play on the wing, he can play as a striker, as a midfielder. Right back है, but वो पोजीशन नहीं खेलना है मेरे को बस. Because I'm a right back, I can play in any position, but not as the right back. ये सिर्फ पोर्चुगीज मीडिया का जो है ना ढिंढोरा है, वो पीटते रहने दो, वो हमेशा करते हैं. वो लास्ट ईयर एवन निल्सन से लिंक कर दिया था हमें, दैट वी आर विलिंग टू पे 70 मिलियन फॉर एवन निल्सन. उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा. भाई डिल्यूजन का कोई जवाब नहीं है ना मीन भाई, मैं वही बोल रहा हूं ना, डिल्यूजन का कोई जवाब नहीं है. नो, आई वोंट, नेवर एवर. क्लोप इस टाइम भाई मैं वही बोल रहा हूं, मैं आई एम नॉट गोना गेट कॉकी टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब तक हम जीतते नहीं तब तक नो जोक्स ऑन क्लब, नो जोक्स ऑन लिवरपूल फ्रॉम माय साइड. हाँ, इसको सब बोलते हैं भाई ये हर जगह खेल सकता है और ये हर जगह हकता है. ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर. We have seen he can do a job against lesser teams in the midfield, but that's it. Once we are not loud enough. ऐसा बोल के तो देखे, इसको जिंदा गाड़ देंगे एनफील्ड में. अरे भाई पोर्चुगीज मीडिया में सीरियसली नहीं लेता, जस्ट लाइक आई डोंट टेक ब्राजीलियन मीडिया सीरियसली. इन दोनों को मैंने सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है. इनका बस चले तो ये हमें किसी से भी लिंक करते हैं. मैं बोलता रहा हूं, एवन निल्सन से लिंक कर दिया एंड पीपल भाई सारे बैंड वैगन अपना लेके भाई एवन निल्सन. भाई मैं वही बोल रहा हूं, डिल्यूटेड फैंस हर फैन बेस में है. हमारे फैन बेस में मार्शियल एफसी है, जिसको लगता है मार्शियल इज द ग्रेटेस्ट टैलेंट एवर. तो डिल्यूटेड फैंस हर फैन बेस में है. कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. सोम भाई he absolutely looked rattled. I would take neither of them. Both are rubbish. I would take neither of them, and both are rubbish on a different, on different notes. So no comparison, and I'm not gonna take either of them. United is much better than both of them, playing for them. So no problems at all. We are sorted on the right hand side. We need a striker, Osimhen. We will keep most probably Weghorst. So we move. Tomorrow 8:30 I will be there. Today I am here for next 10 minutes. Then we can enjoy the Premier League together. And City versus Newcastle. So that's a blockbuster game to start straight away. Straight away. City would be looking to put some pressure before Arsenal plays later on. And we all know it's going to be a routine win for Arsenal against Bournemouth. But then again, it's the Premier League. The best league in the world. You never know what's going to happen. That's, Bournemouth. 20th goes to
Stamford Bridge and gets the win. So same here, bhai. If Kane is available for 50 million, I am taking Kane any day. Any day. Arpajit bhai, the way I am looking at things, if we have a change in ownership, his contract is getting terminated. His terminate is getting terminated. You know, Qataris really wants to start on a high note, and the way the Qatari Twitter is working at this point of time, I won't be surprised if he's laid off. But let's see. You know, not gonna be getting into ifs and buts. We will get to know the final decision very soon. So that would be great, bhai. That would be great. Baba bhai, at this point of time, they have to make sure that they raise, like they are under, the guideline. What's it called? Really sorry. The wage bill. You know, they have to reduce their wage bill by almost 180 million. Then they won't face a ban. If they don't do it, they will face a transfer ban according to Tebas. You know, so let's see. Exactly, they have to raise money and they have to make sure that their wage bill stays intact. They were out of the park last season. They reduced it, but still they have to do a lot more. By 1 year contract, 1 year left here. 1 year left. Don't want that. Don't want that. If he is 80 million, don't want that. Exactly, 200 million. भाई 70 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रेंकी डियोंग इज एनी डे 70-75 million player. Any day. Exactly. Wage bill है, salary cap system है, बहुत issues है इनके. They have no choice but to sell players. भाई मैं इनके अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं करता यार. James Jackson is someone who has been very reliable of late. But इन दोनों के अलावा ये दोनों मोस्टली यार ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं लोग इनको. अपार्ट फ्रॉम देम किसी को भी नहीं. तो बिकॉज ग्लैमर नहीं है ना. ग्लैमर नहीं है. प्रीमियर लीग में इवन इफ यू आर बाइंग एवर्टन, you will get more exposure than buying someone like top 4 club over there. तुम यहाँ का मिड टेबल क्लब उठा लोगे ना, that will give you more exposure, more money than a top 4 club in Spain. Simple. Yeah, then we don't have to pay. Simple. We don't have to pay. That's it. We don't have it again. That's how it works. भाई यहाँ पे तुम्हारा एवर्टन का गेम भाई, स्टेडियम इज फुल, 40,000 50,000. यहाँ पे एवर्टन के गेम्स में योर स्टेडियम्स आर रॉकिंग. सो प्रीमियर लीग जैसी जो मार्केटिंग है वो कहीं नहीं मिलेगी. सिंपल. भाई इसके ऊपर तो केस कर दिया था बार्सा ने इनके ऊपर कि भाई इफ यू आर नॉट getting rid of your deferred wages, we are going to sue you. नहीं चाहिए भाई, कोई अनलॉकिंग नहीं चाहिए रैशफोर्ड को और सांचो को. 80 मिलियन में लॉकिंग अनलॉकिंग करने के लिए नहीं बुलाया हमने उसको. ठीक है, 2 साल 3 साल के लिए. ही इज ऑलरेडी 30. तो हमें 3 साल के बंदे के लिए 80 मिलियन नहीं देने भाई. कोई चांस नहीं है 80 मिलियन नहीं देना. डू आई वांट सिटी टू ड्रॉप पॉइंट टुडे और नॉट? नो भाई. अगर ड्रॉ रहा तो चलेगा. आई डोंट वांट देम टू लूज बिकॉज फिर न्यूकासल वुड बी ऑन आवर हेड्स. आई डोंट वांट दैट. वांट आवर थर्ड पोजीशन टू बी सिक्योर्ड so that in the later stages if we have to rest certain players in the Premier League we can do that because अभी हमारा यूरोपा भी है. 100% है. 100%. Initial few years के बाद you can definitely live on the money, from the television money. Simple as that. इसमें कोई डाउट नहीं है.
There's absolutely no doubt in that. Chalo bhai, 2 more minutes, then I will be ending the stream. I will see you guys tomorrow at 8:30. Those who want to, join me on social media, you have the handles in front of your screen. So, भाई हमें चाहिए नहीं ना यार, हमें 2-3 साल चाहिए ही नहीं. Casemiro was a necessity. As a striker, we need someone new. And Casemiro का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा था भाई. Casemiro का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा था. We paid 60 plus add-ons. It was not a 70 straight away, and that too structured. So 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. हाँ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता तो मैं जरूर बोलता कि भाई we have paid over the top. But all the news that is coming, it says that Kane wants to stay at Spurs. So रहे भाई, तू वहीं रहे, तेरी वही औकात है. When I talk about goals wise, you just want to keep on scoring goals for a failed team. Keep on doing that. If you have absolutely no intention of winning a trophy, stay with them. Absolutely stay all your, for the next 5 years with Spurs. You will have at least 270 to 80 Premier League goals. You will be the top scorer. भाई गारंटी तो किसी का नहीं है. ऐसे तो फिर बोल दो भाई गारंटी किसी का नहीं है. कैसेमिरो की कौन सी गारंटी, एंटनी कौन सी गारंटी. कल को केन आया, केन की इंजरी इश्यूज रहे हैं विद द नीज, नी इंजरी हो जाए आउट फॉर द सीजन, कौन सी गारंटी. ऐसे गारंटी तो कुछ नहीं बोल सकते भाई. इन केन प्लेज इन अ सिस्टम जहां तो उसके अराउंड सब कुछ बिल्ट है. इन स्पर्स, एट स्पर्स क्या गारंटी है यहाँ पे आएगा वो उस तरीके से उसको खेलने ना मिले, ही वोंट स्कोर. ऐसे तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं है भाई. गारंटी पे दुनिया थोड़ी चल रही है. All right, thanks a lot for joining in. Sure thing. भाई तो गारंटी तो केन का गारंटी है. इंजरी हो जाएगा, कौन गारंटी लेगा भाई. लोगे गारंटी. इंजरी हो जाएगा, लोगे गारंटी. फालतू की बात है. ओसिमन की कोई गारंटी नहीं है. बंदे ने हिला रखा है पूरा यूरोप, बट ओसिमन की कोई गारंटी नहीं है. एग्जैक्टली राइट भाई. ही इज नॉट एम्बिशियस. as रतिन भाई said, शेरर का एग्जांपल. क्या उखाड़ लिया शेरर ने भाई, क्या उखाड़ लिया शेरर ने. एटलीस्ट उसने प्रीमियर लीग जीता विथ ब्लैकबर्न. उसके बाद ही वांटेड हिज बॉयहुड क्लब. दैट्स फाइन. इसने तो कुछ नहीं जीता है भाई. इसने तो कुछ नहीं जीता है. नो, ऑफ कोर्स नॉट भाई, ऑफ कोर्स नॉट. क्वालिटी वाइज जमीन आसमान का फर्क है वाउट में और केन में. एंड दैट्स व्हाई वाउट Weghorst, he can play a certain role, but he is nowhere close to Kane. We cannot be deluded. So that's why I said अगर 110 million तक ओसिमन मिलता है तो ठीक है. Otherwise, try for both Kane and Muani for 120 million. दोनों उठा लो. अगर 120 million, I would be more than happy. एक Kane who is, who will give you 2-3 years, and then Kolo Muani who will give you the next 7-8 years, and he will be learning his craft with one of the best in the world. There is no doubt about Kane that he's one of the best in the world. Leonard, thanks a lot for joining in. I was just about to, end the stream. Thanks a lot for joining in, Leonard. And I will see you guys tomorrow at 8:30. The stream is already on. The stream details are already put up. I will see you guys tomorrow. And one comment, Kane is not ambitious. Obviously, at the age of 30, if you sign another contract, that means you are done for any other club. You have 1 year left. If you don't sign a new contract, then I will still count you ambitious. I will still count you ambitious. But I think he's done. Even if he gets back, there won't be any fun apart from the, जो बोलते हैं press conferences. Chalo, I will see you guys tomorrow 8:30, and stay safe. Have a great Saturday night, and spend a lot of quality time with your family. Good night, guys.